लास्ट क्लास में डिस्कस करथिलु कि हमर जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हमर जो फर्स्ट कांग्रेस केबे जो अमेरिकन जो कांग्रेस टा हेतिला सेटा कोठी हेतिला केबे हेतिला तो फर्स्ट कांग्रेस हमर जो अमेरिकन कॉलोनीज मानकर हेतिला सेटा 1774 रे हेतिला हम सेटा बने रखिथिलु लास्ट क्लास रे एटा हम जा पढिथिलु सेला कहूची एंड इट वाज बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड नॉर्थ हैला एते डिटेल्स रे कहि नथिली सेटा लॉर्ड नॉर्थ राइट बिकॉज वी hadn't delved into this chapter हैला अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एबे तुम पढी सारचो तो लॉर्ड नॉर्थ को एक्टिविटीज जोगु आमे देखि परिबा कि इट स्टार्टेड हैला आमे जदी स्लाइटली टे पछो को जिबा समस्या बुझी परचो तो जो हमरा जो फर्स्ट अमेरिकन कांग्रेस जोडा हेथिला सेटा इट मेट ऑफ द 13 कॉलोनीज मेट इन फिलाडेल्फिया right Philadelphia and which was the country that did not which was the one of the colony that did not attend it was Georgia Lord North को activities जोगु से माने start करतला हम जदी slightly पछु को जिबा Lord North करथिले Lord North आनिथिले गोटे act टा जोटा कि आ जाउची हमर टी एक्ट राइट टी एक्ट आनिथिले जोटा कि आनिथिले हमर 1773 रे राइट 1773 रे टी एक्ट आनु टी एक्ट टा कौन थिला दैट अलाउड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल टी डायरेक्टली इन अमेरिका राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे देथिला कि इट कैन डायरेक्टली सेल टी इन अमेरिका प्रॉब्लम कौन ही था डायरेक्टली से माने टी सेल करथिले बिकॉज अमेरिकन जो माने टी सेलर्स माने अछंती अमेरिका रो लोक मानन को पाई प्रॉब्लम हिता ना अमेरिका नो नेटिव अमेरिकन्स मानन को पाई की प्रॉब्लम नेटिव अमेरिकन बिजनेसमैन मानन को पाई की प्रॉब्लम hi बुझी हो समस्त को तो टी एक्ट पास ही जाएगा which in which the East India Company can directly sell tea in the American colonies. That was the entire idea. So naturally the Americans were against it and समस्ते सेथि भाई कौन करथिले ना बोस्टन ने जो पोर्ट अछि समस्ते जाई कि जो बोस्टन टी पार्टी कहंती सब टी को नेकी किछि जण टी को नेकी पानी रे छाडी देथि राइट तो ता परे लॉर्ड नॉर्थ पास करथिले कोन ना हमर बोस्टन पोर्ट एक्ट हमर पोर्ट एक्ट पास हेतिला पोर्ट एक्ट 1774 रे पास हला पोर्ट एक्ट कोन हला ना बोस्टन टी पोर्ट टाको क्लोज करे देला राइट बोस्टन रो टी पोर्ट टाको बोस्टन टी पोर्ट वाज क्लोज एटा मने अछि समस्तकर बोस्टन टी पोर्ट वाज closed in 1774 link टा समस्त शेयर करथुबो ला Boston tea port was closed in the Port Act 1774 and ता परे हमें देखुछु कि हमरो जो माने जो फर्स्ट कांग्रेस रे से माने ओटे पेटिशन नेके जाउचंती राइट कि दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड हैव डन राइट तो एटा को कोन कुहा जाउची फर्स्ट थर जो पेटिशन नेके जाउचंती सेटा को कोन कुहा जाउची ना ऑलिव ब्रांच पेटिशन हैला ऑलिव ब्रांच पेटिशन राइट ऑलिव ब्रांच पेटिशन सेतबेले इंग्लैंड रा राजा के थिले जॉर्ज राइट जॉर्ज 3 क्लियर हला जिबा हमें आज रो क्लास स्टार्ट करबा हला व्हाट वाज सोल्वेरिन with regard to Germany's unification right हमें समस्त पढिछु हमर पढिबार आउथरे भी अछि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड right unification of Italy and Germany seta padibar achi so as you all must have understood this word zollverein with regard to Germany's unification what do you understand by that a branch of carbonary a banking organization custom union or a revolutionary group chatta option bhitru tomku कोटा लागुची एबे जल्दी जल्दी आंसर दबा स्टार्ट करो कि which of the following is the correct answer of correct meaning of zollverein right a branch of carbonary banking organization custom union revolutionary group ये चारटा ऑप्शंस बितरो कोटा आंसर हबो yes absolutely right Dev has given the first answer then we have Nidhi Sunita and Sunita Pradhan Sunita Jena दिजन जाका अछंती answer is C it is a custom union right so zollverein was a German custom union and coalition German states formed to manage tariffs and economic policies within their territory right within their territory next question ko jiba between whom the convention of Gastein was signed hela between whom the convention of Gastein was signed eta ko chapter first difficult laguchi first try to remember eta ko chapter re achi let me tell you this is in the unification of Germany chapter unification of Germany chapter unification of
जर्मनी क्लियर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी रे हमर आंसर आसी गलानी कि लिपिका आंसर दलानी यस यस समस्ते नहीं 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 बी होबनी भाबी कि आंसर करबा चेष्टा करा एंड मीनवाइल हम डिस्कस करछु यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी चैप्टर अछि को थरे को हेडिंग माने को माने कहा भीतर पढिवार अछि ना वॉर विथ डेनमार्क राइट वॉर विथ डेनमार्क हला तम माने भाबुथुबो कि मैम हमर तो डेनमार्क कोठी ऑप्शन रे ही नहीं वॉर विथ डेनमार्क रेडा केमती अछि बिकॉज़ इट इज ऑल रिलेटेड राइट वॉर विथ डेनमार्क अंडर अछि व्हिच बेसिकली हैपेंड फ्रॉम 1864 काहे की वॉर टा स्टार्ट हला जानि रखो कि दीटा जर्मन यस निधि इज एब्सोल्युटली राइट निधि फर्स्ट आंसर दिला देन आई गेस लिपिका भी आंसर दिलानी we'll understand it yes it was the convention which was signed between Austria and Prussia but we'll slightly understand that hela war with Denmark which started in 1864 kahe ki hithila na because tame jani cho by 1871 Germany unify hela but prior to that Germany was not unified right so there were two areas which were Holstein and Schleswig right Holstein and Schleswig right दीटा जगह जगह थिला Holstein and Schleswig तो दीटा जगह जगह ऊपर कौन होथिला ना Denmark was ruling it right Denmark was ruling it माने कौन से actual rule करू नथिला it was actually कौन करथिला it was administering those areas right it was administering the areas of Holstein and Schleswig but slowly कौन होची ना डेनमार्क लोक माने कहउचंते it is pertinent that we should add these two areas Holstein and Schleswig to Denmark itself and माने giving up to the like pressure of the people Denmark रो राजा कौन करथंदी ना दीटा जगह को नै जाउछला not just for administration purpose but for actual ruling purpose and when he is actually taking those two places तांको against रे कौन होची yes रंजिता मु देखिची हैला ठीक अछि यस तो जिनसटा होची दीटा जगह जतले डेनमार्क नहीं जाउची लागटा चिडुची काहाकू ऑस्ट्रियन प्रुशिया तो दी जन जगह जाउचंती एंड ऑस्ट्रियन प्रुशिया कहउचंती वी विल सेंड आवर ट्रूप्स एंड फाइट तो सेमान दी जन ट्रूप्स पठौचंती डेनमार्क रो राजा को हरौचंती दीटा जगह नौचंती एंड हमें देखिबा कि स्लोली दे आर ट्राइंग टू कोन एडमिनिस्टर दोस टू एरियाज so that the convention of Gastein was signed between Austria and Prussia regarding the territories of Holstein Schleswig right so it was signed after the war between Denmark and Prussia where Austria helped Prussia Denmark was defeated and through this convention the winning territory Schleswig was remained under Prussia and Holstein hela Schleswig ta amaro प्रुशिया अंडर रहिला होल्स्टीन टा गला कहा अंडर रे ना ऑस्ट्रिया अंडर रे राइट क्लियर एवरीवन एटा बहुत इजी एटा आंसर करो इन व्हिच ईयर ट्रिपल एंटिटी केम इनटू फोर्स हैला समस्त आंसर देखुची हैला समस्त आंसर देखुची माइंड करिवनी जदी मु स्किप करि जाउची कार माने जदी नाटा बट सी में एवरीबॉडी हैला तो एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन टा अछि ट्रिपल एंटिटी को वर्ष रे साइन हेतिला ट्रिपल एंटिटी असला माने हमर आसीबो को चैप्टर वर्ल्ड वॉर 1 हैला सिलेबस टा को समस्या जो कहंती हैला सिलेबस टा को भलो रे मन रखिबो सिलेबस टा भलो रे मन रखिले को टॉपिक्स ता अंडर रे अछि सेमति मन रखिले इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर इट इमीडिएटली राइट so first answer is given by Nidhi then asla Dev although correct answer achi ki na I will not say anya mane come on everybody try to answer and the small request hela ki please share the video right please share the video we are discussing important questions ya pore mu dekhuchi once we are uploading it offline re dekhuchandi mane offline kochi live thila bele कम पिला देखुचंती किंतु परे से वीडियो टा बेसी जण देखुचंती लाइव थिला बेले यू कैन सी द वीडियो यू कैन आस्क अस क्वेश्चंस राइट so yes absolutely right it was signed in 1907 triple entity right the system of alliances ए टू स्टार्ट करबा हमें समझते हमें सब क्वेश्चन न टिके डीपली अंडरस्टैंडिंग टा माने बुझिबा डीपली अंडरस्टैंड करिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कॉजेस हला कॉजेस क्लियर एवरीवन कॉजेस तो हमर कॉजेस रे फर्स्ट कॉज ता तुम पढी थिबो सिस्टम ऑफ अलायंसेस right system of alliances
started by right started by Bismarck हला Bismarck जत स्टार्ट करथिले पिला माने समस्त देखिबो दैट एटा केबेटू स्टार्ट हेत आमे देखिबा 1871 परठू जतले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी सॉरी थिला सेबेठू बिस्मार्क कोन करती ना द सिस्टम ऑफ अलायंसेस स्टार्ट करू राइट तो कोन होची सिस्टम ऑफ अलायंसेस रे फर्स्ट आमे देखिबा कि गोटे बैटल ऑफ सिडान्स माने लड़ी थिले हला बैटल ऑफ सिडान एउडा सब इंपोर्टेंट आसीबो बैटल ऑफ सिडान कहा भितरे हेथिला जर्मनी and France भितरे हेथिला right Germany and France both fought the war right the battle of Sedan and Germany and France भितरे battle टा होची ता परे आमे गोटे ट्रीटी टा देखिबा को पाइबा ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट हला ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट का भितरे हेथिला जर्मनी एंड फ्रांस भितरे फ्रांस बैटल ऑफ सिडान रे हारी जाइथिला and because of that according to treaty of Frankfurt France had to cede Alsace and Lorraine हला Alsace and Lorraine ताकू दबा को पड़ला कहा को ना जर्मनी क्लियर हला यस एब्सोल्युटली राइट हला देन हमें देखिबा कि ए जो वॉर टा हला दी जण को भितरे दी जण चेष्टा कले कि आम निज साइड रे गोटे कोन करिया ना सपोर्ट टा गैदर कर तो जर्मनी naturally went ahead and it formed a alliance with Austria-Hungary, Russia plus Germany. तीन जन जाक कौन फॉर्मेशन कले को अलायंस रा फॉर्मेशन कले लीग ऑफ थ्री एम्परर्स yes Germany occupied Alsace and Lorraine absolutely right लोपामुद्रा Austria Hungary Russia Germany तीन जन जाक कौन अलायंस फॉर्म कले they formed the league of three emperors clear league of three emperor but तापरे कौन होची ना कांग्रेस ऑफ बर्लिन ला कांग्रेस ऑफ बर्लिन जो थेरे कि हमें देखिबा रशिया आउ ऑस्ट्रिया हंगेरी भितर कौन होची ना देयर इज अ फाइट देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन रशिया एंड ऑस्ट्रिया हंगेरी एंड दे बोथ ब्रेक इट ऑफ एंड जर्मनी कौन करची ना जर्मनी साइडिंग विथ ऑस्ट्रिया हंगेरी हमें देखिबा कांग्रेस ऑफ बर्लिन रे कौन होची ऑस्ट्रिया हंगेरी एएच लिखुची पिला माने एएच वर्सेस रशिया क्लियर ऑस्ट्रिया हंगेरी तो बाय हमें देखिबा यस लीग ऑफ थ्री एम्परर आउ थरे कहबे डेफिनेटली आउ थरे कहबे मु थरे कंप्लीट कर दिया आउ थरे गोटे राउंड कहि देबे हला कांग्रेस ऑफ बर्लिन बिटवीन ऑस्ट्रिया हंगेरी वर्सेस रशिया देन हमें देखिबा कि हमरो डुअल अलायंस बिटवीन ऑस्ट्रिया हंगेरी एंड जर्मनी क्लियर ऑस्ट्रिया हंगेरी एंड जर्मनी तो एटा को देखि कि हमें कोन देखिबा ना तापर पुनी ट्रिपल अलायंस हबो राइट ट्रिपल अलायंस हबो जोटा कि कुआ जिवो कहा कहा भितर ऑस्ट्रिया हंगेरी इटली एंड जर्मनी हला तीन जन के भितर अलायंस ता हमें देखिबा को पाई परिबा यस तमे ईयर गोडा मेंशन हला ईयर गोडा मेंशन कर चल था मु अलायंस गोडा मेंशन कर चल हला ओसे तापरे हमें देखिबा कि एतिकी सरला हमरा ट्रिपल अलायंस फॉर्मेशन हे गला हमरा दीटा साइड थिला ट्रिपल एंटिटी ट्रिपल अलायंस तो एतिकी तो सरला एठी हमें देखिबा कोन होची ना जर्मनी रो राजा चेंज हे जाउचंदी जर्मनी रो जे राजा माने जे थिले बिस्मार्क रो आईडिया थिला कोन ना जर्मनी इज अ सैचुरेटेड कंट्री बिस्मार्क जत बिस्मार्क कहउछ कोन ना जर्मनी इज अ सैचुरेटेड कंट्री ता मानेटा कोन ता माने होची वी डू नॉट नीड टू acquire new areas and we do not need to start a new process of colonization because whatever Germany has the resources are enough the places are enough and Germany will prosper so much so तमे देखिबो कि by 1871 Germany unify हे नथिला किंतु once unify हे जाउची ब्रिटेन रे दो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें देखिबा वर्षे तळे स्टार्ट होउची वर्षे 2 वर्ष तळे स्टार्ट होउची प्रॉपर्ली इंग्लैंड रे जर्मनी के 1871 रे स्टार्ट है कि से कंपीट करिवा स्टार्ट कर देला का से तो ना इंग्लैंड एंड फ्रांस व्हिच वाज अनदर कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एम आई क्लियर
तो जर्मनी रे आसिले केसर विलियम टू ला जर्मनी रो राजा एबे की आसिले ना केसर विलियम टू हला विलियम टू एंड he was of the opinion that Germany ebe kon karibo na nijara imperialistic designs nijara colonialistic ideas seta se expand karibo nijara colonies expand karibo. So once Germany made this statement England kon kala England dropped its policy of splendid isolation splendid isolation माने एटा तारा foreign policy splendid isolation माने होची he माने England will not form an alliance with anybody but just focus on its own industrial revolution, on its own resources, on its own colonies. हैला. So once Kaiser William II made his imperialistic designs very clear, England dropped its policy of एटा छाड़ी देला splendid isolation का छाड़ी देला छाड़ी की से फर्स्ट कोन करछि जानछो फर्स्ट तार इंस्टिंक्टिवली से जाउछि जर्मनी से तो अलायंस बने हा पे बुझी पाछो ही इज गोइंग इंग्लैंड इज गोइंग टू मेक एन अलायंस विथ एक्चुअली जर्मनी इन 1902 हैला but this alliance is not getting fulfilled, right? This alliance is not getting fulfilled. Then से जाउछि कहा से तो जापान से तो अलायंस फॉर्म करिया पई की एंड देन फ्रांस और इंग्लैंड अलायंस फॉर्म करछंती एंड जेहेतु हमें देखियो फ्रांस एंड रशिया दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. Russia was also humiliated in the Congress of Berlin. France was humiliated in the Battle of Sedan. तो दी जन जाका मिसी जाइछंती दी जन जाका आसी कि इंग्लैंड से तो मिसी गले तो फॉर्मेशन हैला कहार ना द ट्रिपल एंट्री इन 1907. Am I clear everyone? Clear हैला एटा इतकी सिस्टम ऑफ अलायंसेस रे अछि. वर्ल्ड वॉर 1 रो सिस्टम ऑफ अलायंसेस रे इट वाज स्टार्टेड बाय बिस्मार्क. देन हमें देखिबा द बैटल वाज फॉट बैटल ऑफ सीडन. रंजिता तम पय आउथरे कहूची सुनुथुवा रंजिता बैटल ऑफ सीडन जोटा हमर जर्मनी एंड फ्रांस भीतर हैला. ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन हैला आफ्टर द बैटल ऑफ सीडन बिटवीन Germany and France, where France had to give Alsace and Lorraine to Germany. Then after that we could see that Austria-Hungary, yes, Austria-Hungary, Russia, Germany, a league of 3 emperors was formed, right? League of 3 emperors was formed, but Congress of Berlin रे Austria-Hungary, Russia रो differences हैला दी जन भीतर झगड़ा हैला तो सेठी से माने दी जन ब्रेक ऑफ करी गले एंड जर्मनी Austria-Hungary सहित साइड कला, right? It sided with Austria-Hungary and triple alliance हमारा फॉर्म हैला केते बेले जेते बेले Austria-Hungary सहित इटली एंड जर्मनी मिसी गले ट्रिपल अलायंस. एंड इंग्लैंड कोन कला ना तार स्प्लेंडेड आइसोलेशन पॉलिसी ड्रॉप कला केते बेले ना जतरे केसर विलियम टू कहउछंती कि मु मोर कॉलोनाइजेशन रो प्रोसेस ता आगु को बढ़ेबी. आई विल एक्वायर कॉलोनीज फॉर 2 पर्पसेस, फॉर गेटिंग रॉ मटेरियल्स एंड फॉर गेटिंग द मार्केट्स फॉर फिनिश प्रोडक्ट्स, राइट? यस yes, real Krishna, yes. Triple alliance, dual entity, real amara asila, yes, correct हैला. आउ किए कहिछ ईयर विषय रे आई होप समस्ते आंसर करछ कोटा 1879 रे डुअल अलायंस डुअल एंटिटी जोटा में कहूचो यस इंग्लैंड और फ्रांस भीतर 1879 रे डुअल अलायंस बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी. यस आफ्टर 1878 रे हमर कांग्रेस ऑफ बर्लिन हैला. 1878 रे कांग्रेस ऑफ बर्लिन होची तो 1879 रे हमर डुअल अलायंस हमें देखियो को पाई परियो हैला. लीग ऑफ 3 एम्परर्स 1873. यस जो बैटल ऑफ सेडान 1871 बैटल ऑफ सेडान 1871 हैला. क्लियर हैला. So let's move on to the next question. एटा तो सेटा देछि England made an alliance with Russia and France in 1907 and in 1907 an entity was formed between France and England which resulted in triple entity in 1907 among France, England and Russia, right? Which रशिया से तो तार अलायंस फॉर्मेशन करिवार एते इच्छा भी नथिला काहे कि ना बिकॉज ऑफ द कम्युनिज्म हैला. Which country was not a permanent member of the League of Nations?
which country was not a permanent member of the League of Nations? Great Britain, Russia, Japan, Italy. ହେଲା एटा आंसर करिया स्टार्ट करो. Which country was not a permanent member of League of Nations? League of Nations formation हेथिला हमरो Paris Peace Conference, right? हमरो Paris Peace Conference रे से माने कोन कहिथिले ना गोटे पीस कॉन्फ्रेंस रे से माने चेष्टा कले लीग ऑफ नेशंस आनिबा पे हैला डुअल एंटिटी से बोधे एटा कहू 1904 रे हेथिला जोटा कि ना फ्रांस और इंग्लैंड भीतर हेची हैला यस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एटा आंसर करो समझते ये फर्स्ट आंसर देला में देखिवा गोटे सेकंड इटली नो ऑप्शंस रे जर्मनी ही नहीं ऑप्शंस रे जर्मनी ही नहीं ऑप्शंस देखि के आंसर करो परमानेंट मेंबर किए नथिला परमानेंट मेंबर रशिया नथिला रशिया वाज नॉट इनवाइटेड ग्रेट ब्रिटेन वाज देयर जापान वाज देयर इटली वाज देयर राइट हम देखिबा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंसेस रे हमर गोटे बिग फोर है बिग फोर हैला बिग फोर रो के थिले इंग्लैंड माने ग्रेट ब्रिटेन देन वी हैड फ्रांस राइट देन वी हैड इटली समझसे हैला देन फोर्थ रे वी हैड यूएसए राइट बिग फोर ये चार जन के थिले इंग्लैंड रो थिले डेविड लॉर्ड जॉर्ज राइट फ्रांस रो थिले किए फ्रांस रो थिले क्लेमेंशियो हैला इटली थिले विक्टोरियो कादम्बिनी मॉर्निंग यस विक्टोरियो ऑर्लैंडो हैला एंड यूएसए रो थिले किए विल्सन हैला वुड्रो विल्सन हैला जे के देथिले कि 14 पॉइंट्स हैला जे के देथिले हमरो 14 पॉइंट्स क्लियर एवरीवन जे के देथिले 14 पॉइंट्स चारटा ऑप्शंस थ्रू तो हमरो कोन हैला दो ही सजेस्टेड द फॉर्मेशन of a new organization which would secure peace among the countries ये जो 14 points रे कहिथिले but he himself did not participate in the League of Nations right निजे ही League of Nations रे पार्ट नहीं यांको छोड़ा जदी आउ को कंट्री बहुत एफिशिएंट बहुत इन्वॉल्वड थिला पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस रे से होची जापान जहा को दरकार थिला कोन ना शांतंग प्रोविंस चाइना रो शांतंग प्रोविंस ता दरकार थिला क्लियर तो सेमान जतले लीग ऑफ नेशंस रो माने जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस करूचंती से माने सेथरे जर्मनी एंड रशिया को इनवाइट कर नथले व्हाई बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू डेविड लॉर्ड जॉर्ज communism is a disease from east हैला रशिया रे चलथिला सतले कोन ना बोल्शेविक रेवोल्यूशन चलथिला राइट एंड रशिया हैड साइंड कोन ना द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क विथ जर्मनी हैला क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा एटा ग्रेट ब्रिटेन जापान इटली फ्रांस were the permanent members of League of Nations Russia joined the league in 1935 which of the following was an organ of the League of Nations हैला was an organ of the League of Nations yes Lenin lead करथिले yes ILO हैला एटा होची ILO Security Council WHO WTO organ of the League of Nations ILO Security Council which of the following was yes of Brest-Litovsk हमरे 1917 रे साइन हिथिला हला गुड मॉर्निंग हिंदुस्तानी गुड मॉर्निंग केविन
which of the following was an organ of the League of Nations? That answer करो समझते. It's absolutely okay. It's absolutely okay as long as you share the link. हैला. First answer I guess ବର୍ଷା ଦେଲା B. ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଛଡା ବାକି ସମସ୍ତେ B answer ଦଉଛନ୍ତି. ପଚାରିଛି କଣ ତମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବ not an organ. ସେ ପଚାରିଛି was an organ. ହେଲା was an organ. ତ was an organ ହଉଛି International Labour Organization. बाकी एगुड़ा होची कोन ना UN रो पार्ट्स. UN रो ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी काउंसिल रे हमरो 15 टा मेंबर्स रु 10 टा परमानेंट नॉन परमानेंट 5 टा परमानेंट मेंबर्स जहा मानक पाखरे अछि कोन ना वीटो पावर. राइट वीटो पावर. क्लियर. Security Council was not a part of the League of Nations. WHO was not a part. WTO World Trade Organization was also not a part. The General Assembly, the Council, the Secretariat, the International Court of Justice, the International Labour Organization were the 5 organs of the League of Nations. General Assembly, the Security Council nahi, just the Council, the Secretariat, the International Court of Justice, the International Labour Organization were the 5 organs of the League of. Clear hela? 5 organization mone rahela. The General Assembly, the Council, the Secretariat, the International Court of Justice, the International Labour Organization. Next, President Hindenburg belonged to which party? Nazi Party, Communist Party, Nationalist Party, Labour Party. Ela President Hindenburg, ela President Hindenburg. Era कोटा आसुची Nazi Party माने कोण? आमरा totalitarianism in Germany and Italy, right? And Russia, absolutely. ela एटा समस्या आंसर करो कि प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग बिलोंग टू व्हिच पार्टी? नाजी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी. यस नेशनलिस्ट पार्टी. फर्स्ट आंसर हुई मिली गला हमरो ऑप्शन सी ला इज द नेशनलिस्ट पार्टी. हिंडनबर्ग वाज leader of the nationalist party. Nazi party formed the government in 1933 with the support of nationalist party, in which Nazi won 288 seats and Nationalist Party won only 52 seats. Right? Next, which one of the following is not true? Japan attacked Manchuria in 1931. Italy attacked on Ethiopia in 1935. Occupation of Czechoslovakia by Germany in 1939. Or Munich Pact was signed between Germany and Russia in 1938. Which of the following is not true? Which of the following is not true? Japan attacked Manchuria 1931. Italy attacked Ethiopia 1935. Occupation of Czechoslovakia by Germany 1939. And the Munich Pact was signed between Germany and Russia 1938. Babita is the first one to give the answer. Niti? Yes, absolutely. Tanmay koila C, baki samaste D. Yes, absolutely correct. D is the answer. Munich Pact was signed between Germany and Russia 1938. Eta chhada baki sabu theek achi. Hela? All these are true. This is not true, right? The Munich Pact was actually signed among UK, France, Italy and Germany. एथरे भी समाने माने कौन रशिया को डाकू नहंती हैला. एथरे भी समाने रशिया को एक्सक्लूड करूचन हैला. UK, France, Italy, Germany. In it guaranteed the annexation of Sudetenland, a part of Czechoslovakia by Germany, and Russia was not invited. Russia was not invited. Clear? Yes. Through which economic plan the whole agricultural land was divided into 2 parts. Government farming, collective farming. New economic policy, first 5-year plan, second 5-year plan, third 5-year plan. हैला एटा कोथरे आसीबो कहलो को चैप्टर रे? Through which economic plan whole agricultural land was divided into 2 parts. Government farming, collective farming. हैला आंसर कर समझते
समझते, come on, start. Yes, yes, first 5-year plan. Yes, absolutely right. The first 5-year plan. The first 5-year plan was adopted in 1929 through the Planning Commission appointed in 1925 by the premiership of Stalin, under the premiership of Stalin. In which front Battle of Stalingrad was fought? Battle of Stalingrad केउठी fought ହେଇଥିଲା? In the Second World War, the Northern Front, Western Front, दी थर ही Western Front देछि. Northern Front, Western Front, एटा होछि Eastern Front and or the Ocean Front. चारटा भितरे easy question अछि. Battle of Stalingrad विषय रे. Battle of Stalingrad ଆମର Northern Front, Western Front, Eastern Front, Ocean Front. चारटा ऑप्शन को कोठी हेथिला. Battle of Stalingrad. Russian Revolution रो first, yes, Russian Revolution. Nidhi and Kadambini, yes, the chapter is correct. Baki, Lopamudra, Nidhi, Sunita, Tanmay, Sunita, tapare Kadambini, Madhusudan deyithila, tapare delete kadala, then Priyadarshini, yes. ठीक ଅଛି. ହେଲା? Yes, the Western Front. ହେଲା? Western Front. नहीं, sorry. The Eastern Front हवा. ହେଲା? Western Front नहीं. एटा होची front. एटा होची option C. Eastern Front. ହେଲା? The Eastern Front. Western Front no, Eastern Front. It was fought in Eastern Front between Russia and Germany. It caused the destruction of the German army. Germany and Russia निज भितर alliance formation करथिले. Germany and Russia निज भितर alliance formation करिकी Russia broke that alliance and it invaded and they fought the Battle of Stalingrad in the Eastern Front in 1942-43 and caused the destruction of the German army. Right? Anti-Comintern Pact between Germany and Japan was signed in which year? 1939, 1935, 1936, 1937. ला आंसर करो समझते. Anti-Comintern Pact between Germany and Japan signed in which year? 1939, 1935, 1936, 1937. Anti-Comintern Pact was signed between Germany and Japan. है तो देखिवा. It was signed on 25th November 1936. Later, Italy joined in November 6th, 1937, which gradually led to the formation of the Rome-Tokyo-Berlin axis. Anti-Comintern Pact was signed in 1936. 1936. In which country was attacked by Italy in 1939? Albania, Abyssinia, Vietnam or Greece. हैला हमरो जेतरे सेकंड वर्ल्ड वॉर होची सेतबेले हमरो जो अलायंस फॉर्मेशन होची हैला इट वाज बिटवीन इटली, ट्रिपल अलायंस, इटली प्लस जर्मनी प्लस जापान. So Germany, you know, it left the League of Nations. Arms and armaments act भी छाड़ी देले and then Italy में देखिबा Italy भी जाइकी अन्य जगह सब acquire करूची, right? तो सेटा को जगह को से attack कला in 1939. Yes, Albania. Yes, Albania is the correct answer, right? Albania. Italy occupied Albania in 1939. It was also a major cause of World War II as its king fled to Greece and Greece was against of Italian expansion. Greece was against Italian expansion. Then on 14th August 1941, Atlantic Charter was signed between USA and UK. Who was the Prime Minister of UK at that time? Atlantic Charter was formed between USA and UK. Who was the Prime Minister of UK at that time? 14th August 1941. 14th August 1941,
Atlantic Charter was signed between USA and UK. Who was the Prime Minister of UK at that time? Roosevelt, Churchill, Attlee, Northcote. Yes. समझे आंसर देलो? Yes, it is Churchill. Right? It was Churchill. Hela? Churchill, 1941. Hela? Answer is Churchill was the Prime Minister of UK and Roosevelt was the President of USA. This charter paved the way for the establishment of the UNO, United Nations Organization. Which of the following pairs is not correct? Geneva, ILO, FAO, Food and Agriculture Organization, Rome, UNESCO, Paris, UNICEF, San Francisco. Which of the following is not correct? USA, Franklin Roosevelt, 14th August, and UK, Amaro, Churchill, right? So, which of the following pairs is not correct? Not correct. Headquarters kaharo correct देगी. International Labour Organization, Geneva, Food and Agriculture Organization, Rome, UNESCO, Paris, UNICEF, San Francisco. कोटा अभी तो ठीक देनी. First answer, I guess, Lopamudra. Lopamudra, Nidhi, Bhagyasini, Dev, Lopamudra. Yes, yes. ठीक कथा. UNICEF is not in San Francisco. है UNICEF is not in San Francisco. Gotte second. It is in, हमें देखिए headquarter of UNICEF is in New York. Was created in 1946, December 11th. The Nobel Prize was awarded to UNICEF in 1965 for promotion of brotherhood and child's wellness. Hela? Next is, under which article of the charter the General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question? Article 96, Article 88, 99, 100. Right? कोटा हैला एमतीआर गोटे क्वेश्चन आसी जाइथिला एसएसबी लेक्चर रे गोटे आर्टिकल से पचारि देथिला तो यू मे नॉट रिमेंबर एवरी अदर आर्टिकल किछिटा इंपोर्टेंट आर्टिकल मन रखि दे हैला जस्ट फॉर योर बेनिफिट राइट बट भूल भाल किछि गेस करिबोनी हैला इफ यू नॉट नो डू नॉट अटेम्प्ट इट तो एमती करी तो माने तमे कोनोसी भी जिंस अटेम्प्ट कर परिबोनी until unless you read it thoroughly, you read it very properly, you cannot attempt the questions. है ना? जैसे जाए thorough ही no person. So पचारची either General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice कि वोटा advisory opinion दियो ना legal question, right? The correct answer is option A, Article 96, right? The charter consists of 111 articles, 111 articles, 19 chapters. Article 96 is related to International Court of Justice, whereas Article 8 deals with the presentation of annual report by the Trusteeship Council. Similarly, 99 and 100 are related to the exercises of Secretary General, right? Hello? So, 19 chapters, 96 is related to International Court of Justice, 88 deals with the representation of annual report by the Trusteeship Council, 99 and 100 deal with the Secretary General. Which of the following countries became the member of NATO in 1999? Finland, Sweden, Poland or Greece? Finland, Sweden, Poland or Greece? Which of the following NATO, North Atlantic Treaty Organization, Finland, Sweden, Poland and Greece? It formation hela kahinki now because of the Cold War, right? Because of the Cold War, we had two sides. One was led by USA promoting capitalism. The other side was led by USSR promoting communism. So it was a battle between, it was an ideological war between the two major superpowers. First answer Lopamudra.
Lipika, yes, it is absolutely correct. It is Poland, right? Poland joined NATO in 1999. Poland, Hungary and Czech Republic became the members in 1999. Greece and Turkey in 1952. Germany in 1955. Greece and Turkey 1952. Germany 1955. 1999 re Poland, Hungary and Czech Republic. Finland is the last country to join NATO in 2023, right? किए कहि परिबा जर्मनी केते नंबर मेंबर थिला टू जॉइन द नेटो? जर्मनी केते नंबर मेंबर थिला हला माने जर्मनी रो नंबर कोन थिला व्हेन इट जॉइंड नेटो हला कहि परिबो? इट वाज द 15th member, right? It was the 15th member to join NATO, right? In which place the conference regarding the formation of NATO took place? New York, 19th, 15th. New York, Washington, Paris or Brussels? B. New York, Washington, Paris, Brussels. है कोठी नेटो रो कॉन्फ्रेंस हेतिला नेटो रो फॉर्मेशन हबो बेली कोठी ये हेतिला कॉन्फ्रेंस हेतिला न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, पेरिस एंड ब्रुसेल्स. Yes, 15th, right. The Washington Conference held in regarding to the formation of the treaty, North Atlantic Treaty Organization treaty, was signed by 12 members in the 4th April of 1949. Washington Conference. Where was the headquarter of Warsaw Pact was situated? Moscow, Poland, Cairo, Trianion. The Warsaw Pact headquarters, where was the headquarters of Warsaw Pact situated? Moscow, Poland, Cairo or Trianion? Headquarters of Warsaw Pact situated. Moscow, Poland, Cairo, Trianion. So jaldi answer karo. Yes, absolutely right. It was in Moscow. Right, the headquarters of Warsaw Pact was situated in Moscow. Warsaw Pact was signed in May 4th, 1955 by 8 countries. Moscow was its headquarters and it dissolved in February 25, 1991 with the ashes of USSR. Right, USSR. Where did Dr. Sun Yat-sen establish the government in 1921? Yan'an, Formosa, Guangzhou or Chongqing? Dr. Sun Yat-sen established the government in 1921. Where? Which place? Yan'an, Formosa, Guangzhou or Chongqing? हला एटा आसीबा हमरो आसिला चाइना रो हला चाइना रो क्वेश्चन आसिला. Sun Yat-sen, where did he establish the government in 1921? Yes, it is Guangzhou. Option C, Guangzhou. At Guangzhou, Sun Yat-sen formed the government. He was the leader and the founder of the Kuomintang. Was founded in 1894. Right? Who were the leaders of Chinese Communist Party of China? Communist Party of China at the time of the Civil War in China. Yuan Shikai, Mao Zedong, Zhou Enlai, Chiang Kai-shek. Hela? Who were the leaders of the Chinese Communist Party at the time of the Civil War in China? Yuan Shikai, Mao Zedong, Zhou Enlai, Chiang Kai-shek. हला दीटा मेजर पार्टी थिला हमरो कम्युनिस्ट पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी. तम से आंसर दे देलो कान्हू. Yes, Mao Zedong is correct. Mao Zedong was correct and Zhou Enlai. Baki Yuan Shikai and Chiang Kai-shek, both of them were actually the nationalist leaders. Nationalist leaders. एमाने हुचंदी किए
माने होचंती कम्युनिस्ट लीडर्स. So answer हबो 2 and हला Mao Zedong, Zhao and Lai. Both Mao Zedong, Zhao and Lai were leaders of CPC, which was formed in 1921. In 1st October 1949, Republic of China was formed by Mao. Hela? Which of the following is not true regarding the post-war reconstruction of Japan? Regarding the post-war reconstruction of Japan. By 1953, the production level reached 1937. Zaibatsu was abolished. Japan became the third economy of the world by 1972. Income doubling plan was initiated by Shingyu Yoshida. Hala? Which of the following is true regarding the post-war reconstruction of Japan? But direct question, right? जेमती कि नेटो रो मीटिंग कोठी हेथिला और हमें देख परिबा कि which of the माने चाइना रो कम्युनिस्ट पार्टी रो लीडर्स के थिले, right? These are very direct questions. Post-war reconstruction of Japan by 1953, the production level reached 1937. Zaibatsu was abolished. Not true Pacharchi. This is correct. This is correct. This Japan became the third economy of the world by 1972, which is not correct is this. Income doubling plan was initiated by whom? Income doubling plan was started by in 1960 by Prime Minister Hayato Ikeda. Shingyu Yoshida was the PM of Japan during 1946 to 47 and 1948 to 54. Ministry of International Trade and Industry was formed in 1949. So it was under Hayato Ikeda and not Yoshida, Shingyu Yoshida. Right? In which year the GATT was signed? 1947, 1946, 1950, 1949. In which year the GATT was 1947, 46, 50? In which year the GATT was signed? 1947, 46, 50, 1949? Yes, absolutely correct, Nidhi. It was in 1947. It was in 1947 that the GATT was signed. GATT was signed on October 30, 1947 by 23 nations at Geneva. GATT became WTO, World Trade Organization, on 1st January 1995, 1st March 1947 IMF, 1946, 1st March 1947 IMF, 1946 is the bank. Yes, this. Who was the Prime Minister of India when India's economy was integrated in the global economy? Last chapter, Unit 2 ra last chapter. Unit 2 ra last chapter. जोड़ा कि हेला हमरो Unit 2 रा last chapter जोड़ा कि हेला हमरो globalization. हेला the Prime Minister of India when India's economy was integrated into the global economy. PV Narasimha Rao, Chandrasekhar, Manmohan Singh, Indira Gandhi. Easy question. It was PV Narasimha Rao जब कि new economic policies हमारा आसिला हमारा LPG reforms आसिला LPG reforms 1990, right? Globalization, privatization and liberalization. कहीं की ना इंडिया रे जितना में देखियो socialization concept चलीला socialization concept चलला माने nationalization majorly है कि थिला that created a fiscal deficit हैला fiscal deficit हैला and India needed almost $7 billion, right? $7 billion, right? And India was given the $7 billion by organizations like IMF, World Bank, and they suggested India that in order to make your economy better, you should open your markets, you should liberalize, you should privatize, you should give space for globalization, right? So आज जी 80 सारी बात
नेक्स्ट क्लास रे विल कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट क्वेश्चंस एबे जाए किछि कार डाउट किछि भी डाउट अछि एबे जाए किछि कार डाउट नाही या परे आमे एबे ऐप रे क्लास करिया 10 9:15 रे हैला 9:15 रे जोडा कि हमरो अफ्रीका रे फ्रॉम अपार्थेड डेमोक्रेसी सेरा लास्ट चैप्टर रहिला ओपीएससी पीजी रो देन हमरो कोर्स सरी जिवो राइट so if you want you can attend the class in the app जोटा क्लास रे पढ़ा हुआ जी from like in Africa from apartheid to democracy केमती racial discrimination रू नै कि केमती से माने गले क्वाडे ना towards democracy because of the efforts of people like Nelson Mandela कौन सब एक्ट थिला एंड के लीडर्स थिले लीडर माने माने मोशन मूवमेंट को केमती टेक हाउ दे टुक इट फॉरवर्ड सेटा ही डिस्कस करी कि विल एंड दी हैला तो no doubts. Thank you everyone for class. Make sure to attend the next class as well.